Okay, bossy. Okay. Good evening, everyone. Myself, Dr. Pranita Patil from Virar, Mumbai. I am your host for today. On behalf of Ignited Minds by PHF, under the mentorship of our beloved Guruji, Dr. Liyakat Namole Sir, I extend a warm and heartfelt welcome to each one of you. As we are now in the second series of Guruji Ke Saath Guruvar, you have witnessed how PHF consistently strives to bring innovative ideas that make learning more interesting and interactive. With upcoming Festival of Lights, we are delighted to illuminate a new theme, what women want. As we embark on this enlightening journey with Ignited Minds by PHF in our 124th session, we are truly excited to explore the minds and hearts of women. To commence this new theme, it is my immense pleasure to introduce a woman who is very close to my heart and has always been a constant source of hope and inspiration in my life. She is one of the strongest women I have encountered. She lifted me up when I fell down and encouraged me with her words of wisdom whenever I felt like giving up. She is none other than my mentor, teacher, and the pillar of PHF, Dr. Manisha Soni ma'am from Virar, Mumbai. Ma'am is the principal of Virar Homeopathic Medical College, which is my mother institution. She has more than 30 years of clinical experience and over 26 years in academics. She is also the HOD of Physiology Department. Her exceptional qualities like patience, being a good listener, and compassion make her an outstanding individual. These are the very qualities that resonate deeply with our today's theme, what women want. And now the brain, or rather the mastermind behind this thought-provoking and insightful concept is, of course, our beloved Guruji, Dr. Liyakat Namole Sir. Sir is known for his empathy, keen observation, and the ability to read between the lines. He quickly understands the why behind the how or behavior of the patient. With over 30 years of rich experience and his unique perspective, he has introduced the concept of gestures into the field of homeopathy, and we proudly call him Master of Gestures. His vision has transformed how we perceive healing, reminding us that every gesture, every emotion carries a story. And through that story, true healing begins. Dear friends, without further delay, please join me in welcoming my mentors and the strongest supports of my life, Dr. Liyakat Namole sir and Dr. Manisha Soni ma'am, with huge round of applause. I'm sure we all are excited and charged up to learn from them this evening. Welcome, sir. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you so much, Beta. It is actually, Doctor, it is actually Nishu's lecture. I am going to be there as a anchor. I mean, what do you call? Yeah, I'm going to be there as a meddlesome man in between to No, you poke have to my be there. nose. It is going to be you together. Yes. Yeah, it's going to be both of us. And Yes. to add one more thing to today's introduction, Manisha madam is my classmate since 11th standard. We've been friends since 1990. She's my sister, my darling sister, and my closest friend. And she's the girl we always looked up to. In fact, she's senior of my wife since school days. So we both of us look up to her, and she has never disappointed. She every time she does something that I feel I should also have achieved in my life. Oh, this is being modest. So without wasting much time, yeah, one more thing that I wanted to add about WWW, what women want. Okay, it's been always a secret for all the men in the world, in fact, even for the women, to understand woman's heart, her emotions. And if you actually try, just be with her for a while, you just be with the woman for a while, and then you realize it is nothing.
like a rocket science. It's very simple to understand uh, the woman's heart, her mind, and emotions. What we have to do is just enter her shoes and just be with her. What I believe is just be with her, explore, touch the chord, touch the chord, touch the right chord is what I always say. Touch the right chord. But to touch the right chord, you have to really uh, be harmonious with the music that is playing in her heart, the vibrations that are happening in her life, the vibrations that she's uh, giving to the world. So, to that, we have to be very simple and just be with her. Don't be artificial with a woman. Please do not be artificial with a woman. Thank you, Tavasu. She nodded and I said, don't be artificial. Don't be artificial with a woman. Even for a woman, don't be artificial. Please. Even for girls, don't be artificial with girls. Even with boys, it's okay. We love artificial. Okay. But with women, don't be artificial, is what I have understood in life. And be accountable to what you do, to what you talk, and be open to apologize. Be humble enough to be grateful to every gesture of hers towards you. Uh, if possible, don't be harsh, because that's what breaks women's heart. Don't be harsh. Okay, even if she's your patient, or she's your assistant, or she's your student, or she's your receptionist, or she's the conductor in the bus, or even if she's the ticket counter girl, lady, don't be harsh with a woman. That is a rule. Don't be harsh with women, please. Even though she's a tomboy, even though she appears to be the strongest, even though she fakes herself to be like a man, do not be harsh with women. If you're being little soft with her, and not being artificial with a woman, you will actually, she will allow you to reach the, to touch the chord. She might open up her heart. Can I share something today, Nishu? Yeah. Today, it's little offbeat, but I tell you, one patient today came to me. Uh, you know what she shared with me today? Doc, I have pain in vagina. I said, okay, beta, fine. She said, you are the only person in the world with whom I can share that I masturbated. And I used a toy to masturbate. This is the first time ever in my life I heard this thing live from a lady sitting in front of me, just 2 feet away from me. So if you are that accountable, if you are that serious about your work, even though you might not appear serious, you don't have to really be, like wearing chashma and sitting, yes, madam. No need to that. Just be who you are. Just be who you are. But just be soft. So this, if she could share, and she shared many things that she even did anal with the toy. Can you imagine a lady of 35, 40, 30, girl of 35, 38 sharing this with me? I said, thank God. I was so humble today. I said, thank God, that patients come and share these things with me so that we heal them. You know, so today is one of the biggest days of my life. I said, if I could be so trustworthy, you know, I don't need a validation from any Tom, Dick, and Harry in the world now. So this is it. So friends, this is why I want this series to be there. You see everywhere. In fact, women doctors are more in homeopathy. Even students, if you see the list of students who take part in the discussion, who take part in the lectures, who take part, though they are not given the real stage yet they haven't got real stage right from Dr. Hanneman. Nobody knows his second wife, who actually published the sixth edition of Organon, who actually took the notes of Dr. Nobody knows her name. Even I don't know her name. I don't remember her name. It was just I remember during my college days. So we do not give them the real due credit, due stage. So I feel I have the responsibility
from whatever I have made my life to be, from whatever name fame I have earned from homeopathy, and otherwise, it's my responsibility to give stage to them and make world understand the the secret of the world, the what women want. Inshallah, in coming 10, 15, 20, 30 odd lectures, guys, we're going to discuss about cases of women, of men and women conflict, of mother and uh, children conflict, of husband and wife conflict, of sasuma and bahu conflict, of bahu and sasuma conflict. Okay, so we're going to discuss that, inshallah. Be with us. If you all, anybody wants to share anything with us, if they want to take a lecture, welcome. Contact my team, contact me, contact any of us. We will surely will listen to your case. Will make you will make it presentable. Will help you to present it. Will try to explore, decode. Will try to decode the problem, and we'll give you the rubrics also, inshallah. Today we're going to have set up rubrics for one fantastic line that madam is going to say. We're going to have set up rubrics. That thing we have decoded today when we were discussing day before. So be with us, guys. Over to you, Nisha. Thank you. So, good evening, everyone. This is again, like Pranita shared, Dr.Manisha Soni from Virar Homeopathic Medical College from Virar. My bro was here, Liyakat. And so thanks, Pranita, for the overwhelmingly warm, introduction. It feels very nice to hear it from our own students. And again, when I heard this topic, when Liyakat shared about, this is how he's exploring about what women want, is what we need to go deep into it. It really intrigued me to think, how do we really go to that, or how do we really present it? But like Pranita said, the brain, the mastermind, it becomes very simple when you discuss it with Liyakat, and that's how. And then when you really discuss it with him, and you feel, oh, it's not such a big rocket science. It's some simple thing. And like he said, two, three things: do not be harsh, don't be artificial. Such wonderful key takeaways. So yes, I am here to present the first session in what women want in this theme, and I hope I will be able to do justice to the topic. So I have, I have a presentation of the case. So I'll request Pranita to share the presentation, please. Yes, ma'am. Can you see? Yeah. Just give me a minute. Yes. So as we know that this is the theme, that is what women want. Let us understand what women want through a journey of the pineal pituitary axis. Next slide. So I can't begin any set of teaching, learning without gratitude to Dr. Hanneman, and of course gratitude to Dr. Liyakat Namole. Liyakat, without your teaching, this would not have been possible. Thank you so much. Next slide. So this is the case. So this is the case of a girl whose age is 20 years. And वो इंडिया से लंदन गई है पढ़ाई करने के लिए. She went in 2022. And she came to me for some complaints, क्योंकि उसकी मम्मी यहाँ पर से मेरी patient है. Or when this girl was in 8th standard, that time she used to come to me for some complaints. So that's how her mother suggested कि यहीं पर से दिखाना है. So this case was given to me over a video call. So she came to me for her complaints were headache. She had discharge from breast, irregular and late menses. Means initially she had very frequent menses. Later on, means recently in 2025, 2024, it has become irregular and also late, and also general feeling of lethargy.
So she has already shown to a lot of doctors in London, and she was put on OC pills, which she did not want to take, and that's how she came for homeopathy. Next. Next slide. So let's see the history of the patient and her life situation. So how did it start? है ना, तो जब मैंने उससे पूछा, पूरा हिस्ट्री पूछी उससे, तो वो बोली कि 2023 में, जैसे वो मास्टर्स करने के लिए गई थी, तो जब वो डेजर्टेशन अपना कर रही थी, लास्ट पार्ट उसका डेजर्टेशन का बाकी था, शी फेल्ड इन वन पार्ट ऑफ हर डेजर्टेशन, एंड देन उसको वहां से सेकंड चांस मिला. शी वाज गिवन अ सेकंड चांस टू रीडू इट. So patient के words थे कि it was very traumatizing for me as I had never failed in my life. So since then she started getting anxiety attacks, breathlessness and shivering. So this was one aspect. Second aspect was that since 2021 she was in a relationship with a boy, and this boy is in India. वो उसका school friend है और school के time से they know each other, but 2021 से they were dating each other. और बट अब ये पेशेंट तो लंदन आ गई है, एंड शी वाज वर्किंग आल्सो ओवर हियर, मतलब स्टडिंग एंड वर्किंग. तो क्या हो रहा था, शी वाज नॉट गेटिंग टाइम टू टॉक टू हिम. सो बिकॉज ऑफ दैट वो थोड़ा सा उन दोनों के बीच में देयर वाज डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन. सो हर बॉयफ्रेंड यूज्ड टू से कि आई एम आल्सो वर्किंग, सो यू आर नॉट डूइंग समथिंग डिफरेंट. यू नो, जब उनकी बातें होती थी, सो ही यूज्ड टू टेल दिस टू हर. नेक्स्ट लाइन. No, before that. Yeah. So they started having differences of opinion, and also they started quarreling on small things. So what the patient used to do, कि अपना काम खत्म होने के बाद she used to call him, but there is a difference of time, almost 6 hours to 7 hours difference between India and UK. So because of the time difference, उन दोनों की बात नहीं होती थी, and when he was working he wouldn't call, but he expected her to call. And also there was one discussion that he wanted her to come back to India, and he used to say ki tula kai garaz ahe, your parents are very well to do, because a girl comes from a family where the father is into a hotel business. But patient said that patient felt, why can't he understand? So then I asked her ki what did you feel ki म्हणजे तुला राग आला होता की असं बोलल्यावरती? बोली नाही, मला वाईट वाटलं. She also felt that he was not supportive, and she did not want to come back to India, but she wanted to have a career in UK. And finally, because of these differences and because of these quarrels, they broke up. Also, she had come to London on a loan, and she did not want to put any burden on her parents because they had their own problems. Next slide. So once they broke up, after the breakup happened, this girl, that is this patient, also got into different relationships in London. But every time, whenever she was dating a person, she always had that deep feeling that this will not work out. This won't work out. This is what she felt. And she also had feelings like, what if it was my fault? So all these regarding the breakup that had happened with her boyfriend back in India, she had this feeling ki, मेरी गलती थी क्या कहीं, what if it was my fault? Next slide. Now let's see her as a person. So this was her case and her history or what she said. So as a person, she said that I am I can cry very easily. Whenever I see a movie also, I start weeping. And she has a younger brother who is almost 8 years younger to her. And of course, as children, when they were growing up, they had fights. Father is in hotel business, and he has this habit of getting into alcohol. Then I asked her regarding her, because the diagnosis that was done was that there was a pineal gland cyst. The MRI was done. So she said that regarding her cyst, because there in UK, the National Health Scheme, there, you are sent from one doctor, they send you to another person to do the test, and you have to follow whatever rules they say. They directly don't give you any medicines. So she was concerned ki हे नक्की काय connection आहे.
का मला सेकंड MRI करायला सांगितलंय. And she said that these people have not told me anything. Means they like how we discuss with patients. So वहाँ पे nobody used to discuss anything. So when I asked her, so this was also her concern कि why am I told to do a second MRI? So in the first MRI there was a pineal gland. It was diagnosed as a pineal gland cyst. Yeah. Next slide. So you can see, if Pranita, if you can just zoom this. So this is the report before when she came to me. So she had complaints of, this is a condition of galactorrhea. So prolactin levels were 907 and a cystic gland lesion measuring 9 by 12 by 7 millimeters. So this was her condition when she started the treatment. Also, her prolactin has been high in October 2024, then even in 2025. And this was when she started. Next slide. So this, if you can see how it shows that the size of, now it is showing, the second MRI shows a pituitary microadenoma 4 millimeters. The size after medicine has reduced from 9 millimeters to 4 millimeters. And also, her reports of prolactin, the recent prolactin levels in September, that is September 2025, was 67.48, which was earlier 907. Yeah. So next slide. So before we get into a discussion, just wanted to share what is the metaphysics of this kind of a condition. That is a pineal gland and the pituitary gland. If you see the anatomy, both of them are situated very close to each other, but they are not directly connected, but they are close to each other. And pineal gland is situated superiorly, and the role is that the pineal gland is actually which is stimulating the pituitary gland to release the sex hormones. So that's how both of them are connected. So what is the metaphysics which is going behind this condition? It is a feeding conflict. The feeding conflict is like, prolactin is secreted or it is released in the body after parturition, that is after delivery, for milk production. But if it is released in a case when the unmarried girls, then they have discharge from the breast. So in this situation, she was having discharge from the breast. So what is this conflict? Is called as a feeding conflict, where you are not being able to nourish, because how a mother nourishes the child through milk. But here, what was the nourishment that this girl was giving? Whom was she giving? So she was trying to feed her boyfriend. Yeah. So we'll stop here. We can exit the slides, Pranita. So this is the case of a journey in the pineal pituitary axis, with this girl having irregular menses and also discharge from the breast and headache. These were her physical symptoms. So now you all can share your understanding, what you have understood. How would you want to analyze this case? Or what is it that you understand, that what is this woman or what is this girl wanting? Yes, please share. केस समझा है सबको? केस समझ में आया है? Silence. Yes, ma'am. Yes. Please share your understanding. मैम ये जो गर्ल है ना, इसको जो एलिमेंट स्टार्ट हुए ना, जब वो उस एग्जाम में फेल हो गई ना, वहां से उस एलिमेंट स्टार्ट हो गए. वो बोली ना, मैं पहली बार एग्जाम में फेल हो गई हूँ. और दूसरी बात, उसका जो बॉयफ्रेंड था ना, तो उसको समझ के नहीं ले रहा था. ओके. ये उसको समझ लेती थी, पर इसकी जो प्रॉब्लम थी,
तो वो समझ में नहीं रहता, तो वहां से इसको ये पैथोलॉजी शुरू हो गई, प्रॉब्लम शुरू हो गई। ओके बाकी रेमेडी तो मेरे ध्यान में नहीं आ गई मैम, बाकी आपसे सीखते हैं। ओके, तो आप इसको रूब्रिक में कैसे समझेंगे? आपने जो बोला कि वो उसका एग्जाम का ही उसका वो था, जब वो फेल हुई वो चीज मेन थी, या पेशेंट ने क्या बोला था? सुनने के बाद तो ये ऐसा लगा कि वो उसने फेल होना तो हो सकता, जैसा कि उसने थोड़ा सा मन पे ले लिया कि मैं पहली बार फेल हो गई, ऐसा फेल तो नहीं होना था। तो ओके, उसने वो जो बात है फेल होना, अपने मन पे ले ली ना मैम। मन पे ले लिया, वेरी गुड। तो ये क्या चीज है मन पे लेना, इसको क्या बोलेंगे? लतिका हैज मेंशन्ड सेल्फ रिप्रोच, या लतिका इज लतिका फ्रॉम VHMC इफ आई एम नॉट रॉन्ग? मैम यस मैम। इसको एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस भी ले सकते हैं ना? क्या ले सकते हैं? एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेल्यूर, स्टूडेंट का पढ़ाई उसका बिजनेस है ना? क्या नहीं, ऐसा नहीं ले सकते? एलिमेंट्स फ्रॉम फेल्यूर। एलिमेंट्स फ्रॉम कौन सा फेलियर? ये एलिमेंट्स फ्रॉम फेलियर है क्या सर? या लतिका, लतिका कैन शेयर? गुड टू सी यू कमिंग इन द सेशन। यस मैम। मैम सेल्फ रिप्रोच ले सकते हैं हम। ओके, फेल्योर आया उस वजह से भी, और रिलेशनशिप में जो उसकी कंडीशंस थी, नेक्स्ट रिलेशनशिप में जैसे वो गई, उसके बाद भी उसको लगने लगा कि मेरी खुद की गलती है क्या। Nishi, you want me to share the repertory? नहीं, या यू कैन साइमल्टेनियसली इफ यू आर देयर। Yeah, हाँ, है ना? सेल्फ और रिप्रोच को लतिका क्या बोलेंगे? सॉरी मैम। ये जो तुमने बोला सेल्फ रिप्रोच, इसको क्या बोलेंगे? रूब्रिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? ब्लेम करना, खुद को ब्लेम करना, वही। गुड, यस। She is also one of our good students, huh? Liyakat. She's joined us for हाँ, the session. Yes. okay, Latika. Wait. Yes. What else? गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे वो पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन हाँ, वो रिलेशनशिप की वजह से वो डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि उसको बात करने के लिए वो टाइम देना पड़ता था, और इस हाँ, तरीके से वो डिस्टर्ब होने की वजह से वो फेल हुई थी। तो इसलिए फेल होने के बाद उसको अच्छा नहीं लगा। और तो यहाँ पर मैम ये डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग आ रही है। very अ, good. और Yeah. एलिमेंट्स फ्रॉम ये, इसको ग्रीफ भी हुआ और डिसअपॉइंटमेंट भी मिला और हर्ट भी हुई। और इसके बाद मैम ये रिस्पॉन्सिबल भी लग रही है, क्योंकि ये खुद से लोन चुकाना चाहती है, अपने पेरेंट्स पर भार नहीं डालना चाहती है, और अपने कैरियर को आगे ले जाना चाहती है। तो अम, ये इसका ऐसे ही लग रहा है, इसी के बारे में और सोचते हैं मैम। Yes. Good, good. Nice thinking. Yeah. थैंक यू मैम। Yes. So what would be the rubric that you're thinking about, beta? एक तो लव डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, See, I took that. एलिमेंट्स Anything फ्रॉम else? ग्रीफ, और आपने जो वो करियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोला? रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू मच सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वो खुद से लोन चुकाना चाहती है। हाँ, और और अभी इतना ही समझ में आया। ओके, और कोई? मैम फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट भी इसमें लग रहा है। क्यों ऐसा लग फेल रहा है? होने ये फेल होने की वजह से जो अपना ठीक से काम नहीं कर पा रही है, फोकस नहीं कर पा रही है, और सेकंड बार भी उसको अच्छा रिलेशन नहीं मिल पा रहा है, तो इन सब की वजह से वो एम्बेरस भी हो रही है, ऐसा लग रहा है।
नहीं मतलब वो ऐसा कहाँ कहाँ लग रहा है आपको एम्बैरेस? जैसे लियाकत सर ने हमेशा बताया ना कि आप जो ऐसा बहुत स्ट्रांगली एविडेंट चीज हो वो आप लो, एज्यूम नहीं करेंगे हम इसमें, है ना? ओके मैम, ठीक, ओके, थैंक यू। और किसी को बताना है कुछ? देखो सर ने अभी दिखाया है। Anybody else? पेशेंट ने क्या बोला था जब भी वो उसका डिसर्टेशन फेल हुआ, तभी वो पेशेंट के वर्ड्स क्या थे? यस, पेशेंट के वर्ड्स क्या थे? और कोई एस्पेक्ट आप लोगों को लग रहा है इस केस के बारे में? डिसअपॉइंटमेंट, लव डिसअपॉइंटमेंट लिया है, ओके, व्हाट एल्स? Good लतिका, व्हाट evening. इज योर रूब्रिक? Self-reproach, ma'am. सेल्फ रिप्रोच, ओके. Hetal is saying ambitious. Okay. Anything else? So क्या रेमेडी क्या लग रही है? With this, what is the Liyakat? Can you share the screen? What is the remedy chart? Yeah. So what is the remedy? It's showing natrimur, aurum, carcinosin, kalika, magnesia. Somebody said traumatizing laga. Who said? Anybody said? Yeah, in the chat. Acha, okay. Yeah, Pragati Gaikwad, Dr. Pragati Gaikwad. Yes. Yes, Pragati. Pragati saying carcinosin. Yeah, Liyakat, if you can share that aspect of the rubrics we want to hear now. But come on, you got to do that. See, what is traumatizing? Hello, what is trauma? What is trauma? Anybody? How do you get trauma? Trauma is an injury, right? So because of that, somebody said ना कि embarrassment के बारे में किसने बोला कि उसके कारण she is not able to work, it is affecting her work. And somebody said ना, हाँ, somebody said कि वो failure के कारण she is not able to work. She is not able to concentrate because of the failure. One, and she herself said कि that experience of failing was very traumatizing. So you go very simple. What is a trauma? Trauma is an injury. So there is a simple rubric: delusion, injury, being injured, right? Rest, Nishu will say. Yeah. Rest is yours. What else? Yeah, it was traumatizing as I'd never. So yes, traumatizing, like how Sir said, trauma is injury. So simple rubric, when you're talking about injury, it is delusion. She's feeling that she is being injured. And then she's going through that aspect of
blaming herself also. What else? What else she was feeling? See, how we understand the person is through the reaction of the person. Disappointment in love is an action. Fair enough. The boy's behavior to her is an action. But the reaction of the lady is going to talk about the person she is. That's why we took being injured. That's what she felt, that it was traumatizing for me. Even the failure was a traumatizing for me. So, and she wanted to be understood. उसका भी अपन आगे explore करेंगे. But right now, and this aspect of how she is dealing with the situation post breakup, वो सब क्या है? If anybody can think and tell. वो क्या सोच रही है उसके बाद? Once the breakup has happened, उसके बाद how is her thought process? मैम एंजाइटी कंसर्न्स लगा। Anxiety, concerns. वो सोच रही ना कि मैं कुछ मुझ में तो कुछ गलती गलती नहीं है ऐसा। कंसाइंस होता तो इतने अफेयर्स करती क्या उसके बाद वो? सिंपल। कंसाइंस होता तो वही बोला ना, अफेयर नहीं करती ना फिर वो। मैम जहाँ तक समझ में आ रहा है मैम, ऐसा लग रहा है कि 2 बार रिलेशनशिप में फेलियर होने के बाद वो सोच रही है कि मुझे अपने ये लोन वगैरह चुकाना है, तो मुझे अपने कैरियर पर ही फोकस करना होगा, अब इसी पर ध्यान देना होगा। ऐसा कहाँ लग रहा आपको? अच्छा, करियर में तो वो कर रही है, वो बोल रही है, वो तो बात सही है कि वो उसको वहां जाना है, क्योंकि उसने बोला ना कि शी डिड नॉट वांट टू कम बैक, शी वांटेड टू हैव अ करियर इन लंदन। हाँ, हाँ, अच्छा, तो इसके बाद कुछ समझ में नहीं आया मैम इसका मतलब। नहीं, आप बराबर से सोच रहे हो, लेकिन वो हम थोड़ा जाके रेज्यूम नहीं करें, उतना है बस। जी, यस मैम। और कुछ? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा बीच में थोड़ा सा मिस हुआ, आई डोंट नो। एम्बिशियस है, शी इज वेरी एम्बिशियस। और उसको मतलब ऐसा भी लग रहा है कि उसको कोई समझ नहीं रहा, उसको सपोर्ट भी चाहिए, नॉट पूरा, पर उसको सपोर्ट चाहिए। तभी वो एक रिलेशनशिप जहां उसको वो लगा कि वो टॉक्सिक हो रहा है, वहां से उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही, तो शी लेफ्ट। तो उसको लगा कि उसका फोकस भी अपने करियर से हट रहा है। पर जब उसको सेकंड में भी कुछ उसके वैसा मैचिंग नहीं मिला, उसको सपोर्ट नहीं मिली सो दैट शी कैन मूव, तो वहां पर उसके कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ गए, वहां से उसका प्रॉब्लम्स और बढ़ गया। वो क्या मैंने ऐसा चाहती थी? हाँ, वो क्या चाहती थी? मुझे लगा वो चाहती थी कि कोई ऐसा पर्सन हो जो उसको समझ के उसको सपोर्ट करे। हाँ, यानी वो क्या चाहती है? समझ के सपोर्ट करे, यानी क्या चाहती है वो लाइफ में? उसको क्या चाहिए था? वो इतने रिलेशनशिप्स में क्यों जा रही थी? क्या चाहिए था उसे? एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर who can push her move forward. एंड हार्मनी बोल सकते हैं, शी वांट्स लव केयर भी हार्मनी। चाहिए थी उसको, लव एंड केयर भी चाहिए थी। या शी वांट्स लव ना? हाँ, दैट इज व्हाई शी इज गेटिंग इनटू relationships ना? राइट। हाँ, Yeah. But at the same time, what is her feeling when she is going into relationships? What is her feeling? शी इज सेक्सुअली अब्यूज्ड टाइप्स, कि वहां पे वो सपोर्ट नहीं मिल रही है एंड नहीं, ऐसा कहीं पर भी कुछ मेंशन नहीं है हाँ, ना। एग्जैक्टली तो नहीं है, राइट।
सपोर्ट ढूंढ रही है क्या? कहाँ सपोर्ट? कहाँ पे? वो तो खुद से लंदन जा रही है, खुद लोन पे कर रही है, सपोर्ट नहीं चाहिए उसको। सपोर्ट वैसे नहीं, पर तो जैसे कैसे? उसको। सपोर्ट शब्द ही गलत है। अच्छा, हाँ। सहारा कहाँ चाहिए उसको? हिंदी में बात करो, अंग्रेजी आते नहीं तुम लोगों को, एनआरआईज को। हिंदी में बात करो, हिंदी में, यूपी वाली हिंदी। सहारा नहीं चाहिए बाबू, प्रेम चाहिए हमका। प्रेम चाहिए। यस, सो शैल वी शो यू द, और किसी को कुछ बोलना है? Pranita can share the next slide. Let's see what we have analyzed this case as. Yes. No, before this, huh? So, like you all very nicely said, even Latika, many of you all said that, she's feeling that she's blaming herself. So that was right. This is reproaching. Because she's continuously saying that what if it was my fault? Guilty feeling ho raha hai. Then that it started, everybody also really nicely understood about whenever that, she failed. She felt it was very traumatizing. So again, same very clearly, delusion, injury, being injured, and all what she has gone through, so that subtle feeling is there that uske sath galati ho raha hai. So that's why delusion, wrong, suffered. Also what she said was, when she was going into relationships, कि मुझे लगता था कि this won't work out, so this is doubtful, skeptical. So she was very skeptical about the relationships, breakup होने के बाद जब ये लंदन में भी उसने एक दो बॉयफ्रेंड्स उसके हुए, तो वो ज्यादा नहीं चला because of this feeling कि this will not work. And like how we understood, there was disappointment in love, there was grief. Also, this girl is like, when she said that I am, I can weep very easily. I weep when I see the movies. So this is sentimental, this very emotional aspect of this girl. Because of all this, her confidence was shaken. And जैसे हम लोगों ने अभी डिसाइड बात करी कि उसको क्या चाहिए था, उसको प्यार चाहिए था, लेकिन वो कोई भी रिलेशनशिप में आगे टिक रही थी क्या? एक ब्रेकअप होने के बाद उसने एक दो लड़कों के साथ उसके रिलेशनशिप्स हुए, लेकिन वो लड़कों के साथ उसका रिलेशनशिप टिक नहीं रहा था, क्योंकि मन में उसके वो एक डाउट था और उसे लगा था कि ये आगे चलेगा नहीं, दिस विल नॉट वर्क. तो उसे वो प्यार भी चाहिए, लेकिन उसे प्यार से डर भी लग रहा है. सो दिस इज फियर ऑफ लिक्विड्स विथ थर्स्ट. So any idea about what is the remedy? Let's see the repertorization chart. Yeah, can everybody see what is the repertorization? Ambition increased is also there. Grief is there. Lachesis, ma'am, lachesis. Lachesis, yes. This is a case of lachesis. Lachesis was given in 200 weekly doses, and when she came back in the month of September to India, we have seen in the before after reports that her prolactin also has reduced, and her pituitary gland size also has reduced from 9 to it has become 4. So this is a case of lachesis. Now let's understand this case in terms of retrospective understanding. So here I hand it over to Liyakat to share the the retrospective understanding of what are the different kinds of what other rubrics we can understand. Yeah, Liyakat. Okay, you'll have to help me, Nishu, in understanding what she wanted, what she exactly meant by उसको समझ के लेना चाहिए था. परी, स्क्रीन शेयर बंद कर बेटा. हाँ. है ना? She wanted to be understood, na? So Yeah, the she wanted crux to be of the case understood. is, yeah. So the crux of this case is what women want is to be understood. Yes. Of this case, जो निचोड़ है, inference of this case is to be understood, is what we believe in this case, है ना? Like we have to, like I said, like I promised that we'll understand what woman wants, is what emotions she's carrying,
Here it is that she wanted to be understood. है ना, समझ के लिए नहीं ले रहा था ना. मतलब कैसा था ना कि what she said कि the boy is also into hotel industry and this girl is also into hotel industry, है ना. तो it is simple ना, that the man boy should have understood कि भाई यूके के अंदर इसको ज्यादा स्कोप है, उधर जाएंगे हम, अपना आशियाना बनाएंगे या कुछ करेंगे, उसके अपने सपने होते हैं ना. होते हैं ना, हर लड़की को सपने होते हैं, और प्रेम की उम्र में तो होती ही है उम्मीद. हम लोग उसको तो उम्मीद ही सा काल बोलते हैं हम लोग कि भाई ये चढ़ता सूरज है. तो यहाँ पर तो आपके ख्वाब होते ही है ना, टू रीच द टॉप मोस्ट. सूरज के भी तो ख्वाब होता है ना कि 12 बजे मैं दुनिया के सबसे पीक पॉइंट पर जाऊंगा, सबसे ज्यादा चमकूंगा, है ना. सूरज भी तो ख्वाब देखता है ना कि भाई मैं एकदम मस्त वो छोर पे जाऊंगा, इधर एकदम ठंडा रहेगा, इधर एकदम गर्म रहेगा. तो हर किसी को जाना है. तो शी वांटेड टू बी देयर एंड इट इज वेरी सिंपल. तो द बॉय इज अ हिपोक्राइट, है ना. इस चीज से उसको तकलीफ हो रही है. तो ये एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ तो है. बट टू बी अंडरस्टूड का हमने क्या क्या उस दिन निकाला था निशु? व्हाट वाज द रुब्रिक दैट वी हैड टेकन? अंडरस्टूड का ऐसा था कि उसको दिस ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ना. Yes, exactly. It is a very simple thing. She is wanting a very simple, very reasonable, very वाजिब. Reasonable का मतलब क्या? वाजिब, है ना. बिग बाजार का टैगलाइन होता था ना, क्या होता था? रीजनेबल. बिग बाजार में होता था कि रीजनेबल प्राइसेस, है ना. रीजनेबल प्राइस मतलब वाजिब, ना कम ना ज्यादा, स्वाद ताजा ताजा, कुरकुरा मजा, वो वाला. ना कम ना ज्यादा भाई, एकदम सिंपल है. हमको क्या चाहिए कि समझ लेना भाई, और वही तो चाहता है ना हर कोई. एवरी रिलेशनशिप में हम लोग क्या चाहते हैं कि समझ कर चलो. हाँ, कुछ लोगों का एडेप्टेशन अलग होता है कि वो चलो नहीं समझ के लेते, हस्बैंड सास अच्छी है वगैरह, ऐसा भी चलता है. वो भी आएंगे आपके आगे चल के इंशाल्लाह. ऐसा होता है ना कई बार, औरतें पुल ऑन करती है करती है करती है. बट इसका थैंक गॉड ये था कि शी वॉज नॉट into wedlock. Thank God she was not locked in the wedding. Thank God. Really. वो प्यार में ही रही. तो आजकल मैं सबको यही समझाता हूँ कि प्यार करो, शादी करते हो सबसे सलाह लो. सीरियसली, जल्दबाजी मत करो. सबको बोलता हूँ मैं, मेरी बेटी को भी बोला हूँ कि प्यार करना, शादी करने से पहले मेरे को पूछना बेटा. क्योंकि इट्स ऑफ कोर्स कमिटमेंट हो जाती है ना बहुत ज्यादा. इश्क में प्यार में भी कमिटमेंट चाह रही थी ना ये, कि यार आप क्या चाहते हो कि आप एक दूसरे को सपोर्ट ये करोगे ना, आप एक दूसरे को समझ कर लोगे, उसको है ना. लग रहा था कि मैं इतनी दूर गई हूँ तो हाँ, पे बात करना है, नहीं टाइम मैनेज हो रहा है तो मुझे समझे. एग्जैक्टली. का समझून घेत नहीं है. हाँ, क्यों नहीं समझ के, सच्ची बात है ना यार, लगेगा ना. और ये दर्द से बेचारी रो रही थी, तो ये उसका ग्रीफ भी था. हाँ. ये चीज को खा रही थी, दिस वाज ईटिंग हर, है ना. एंड उसका जो था कि व्हाई शी वाज नॉट गेटिंग इनटू सीरियस रिलेशनशिप, I have taken out some set of rubrics for that. ये adaptation है इसका, है ना. This is what we call adaptation. कि what the patient does, है ना. What the patient says, why the patient says, and how the patient says, what the patient says. What the patient does, how the patient does, and why the patient does, है ना. तो what is she doing? This is what we call adaptation, right? तो क्या था उसके मन में, अभी भी डाउट है देखो. उसको अभी भी लग रहा है, मतलब ये बच्ची प्यार कितना चाहती है, ये कितना चाहती है. मेरे को तो ऐसा लगता है अभी भी उसके मन में वो लड़का है. बोली भी ना उसने कि शायद मैं ही गलत थी कहीं पे. अभी भी वो खुद को ही दोष दे रही, रिप्रोचिंग हरसेल्फ. उसको अभी भी लगता है कि शायद मेरी गलती होगी. मतलब देखो कि ये वो वाली लड़की की वो ईगो पर नहीं ले रही कि हट उसने समझ के लिए लिया, आई एम गोना मूव ऑन. वो प्लेटिना वाली नहीं है, या फिर वो है नो बॉम्बास्टिक टाइप नहीं कि चलो यार. सुपरफिशियल नहीं है, इसका बहुत गहरा है प्यार, है ना. एनिमल लव है, एनिमल लव बहुत डीप होता है, ठीक है. रॉन्ग डन, है ना. डाउटफुल स्केप्टिकल कैसे कि जैसे मैडम ने बताया कि अभी भी उसको डाउट है, स्केप्टिकल है ना, शी स्टिल स्केप्टिकल कि यार वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा, वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा, है ना. क्यों है कि वही सफरिंग से उसको दोबारा नहीं जाना है. कि वो जो उसके फर्स्ट बॉयफ्रेंड के साथ में उसका हुआ है कि भैया प्रेम में फिर ये एक्सपेक्टेशन और फिर डिसअपॉइंटमेंट, एक्सपेक्टेशन फिर डिसअपॉइंटमेंट, या कहीं पर उसको आजकल की दुनिया में आप लोग बोलते हैं रेड फ्लैग्स. जैसे अभी सुमी ने बोला कि टॉक्सिक लगा. प्लीज डोंट यूज दिस वर्ड्स टॉक्सिक, दैट बिकम्स लाइक फियर ऑफ बीइंग पॉइजन, है ना. बच्चों को बोलने दो टॉक्सिक टॉक्सिक. आजकल कैसा ट्रेंड रहता है ना, या हमारे टाइम में एक वर्ड था या, बहुत ट्रेंडिंग था. अब के आजकल के जमाने में आपके वाइब्स बहुत ट्रेंडिंग है, टॉक्सिक बहुत ट्रेंडिंग है, क्लीशे ये वर्ड बहुत ट्रेंडिंग है.
और क्या है ट्रेंडिंग आपका? व्हाट इज द अदर वर्ड? लेजिट। लेजिट भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग वर्ड है आजकल के जमाने में। ये देख लो, आजकल बच्चे अगर आप सुनोगे ना तो ये 4 वर्ड तो आएंगे ही आएंगे। मतलब 10 मिनट अगर कोई लड़का आजकल बात कर रहा है उसमें से 4 शब्द में से 3 तो आएंगे। एनीवेज, तो ये जमाने का है, वो तो हवा चलती है ना, तो लफ्जों की भी हवा चलती है ना, लफ्ज भी आते हैं ना यार हवाओं में। खैर, तो डिलीजन रॉन्ग डन, डिलीजन स्केप्टिकल, फियर सफरिंग, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड अगेन, कि पहले से धोखा मिला है, यहाँ पर भी धोखा ना मिले। फियर डिसीज ऑफ द हार्ट, कि भाई ये बीमारी मुझे फिर से ना लग जाए, प्रेम की बीमारी, दिल की बीमारी ना लग जाए। फियर लिक्विड्स विथ थर्स्ट, ये बहुत प्यारी चीज है, उसको प्यार चाहिए, प्यासी है वो, तभी तो 2-4 बॉयफ्रेंड्स हो गए ना इसके बाद में, जितने भी 1-2 बॉयफ्रेंड हुए हैं, प्यासी है ना। प्यार क्या है? प्यार भी तो प्यास है ना। हेलो, तो प्यासी है लेकिन उसको पीने से डर लग रहा है। प्यासी है लेकिन पीने से डर लग रहा है, ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम आएगा आपको। कभी भी आपको कोई चीज चाहिए लेकिन अब वो चीज से आपको डर लग रहा हो, तो इसके अंदर बहुत लोग आते हैं, जो लोग वो बम्बल वगैरह पर नहीं जाते, वो लोग भी इसमें आते हैं। बम्बल टिंडर पे जो लोग प्यार चाहते हैं, अकेले होते हैं लेकिन जाते नहीं है, उनमें है ये लोग। तो फियर ऑफ लिक्विड्स विथ थर्स्ट, फियर स्ट्रेंजर, बिकॉज कोई आपके साथ में कोई रह रहा है, इसका मतलब कि आप उसको जानते हो ऐसा नहीं है। देखो उसके अंदर बहुत अच्छा फियर ऑफ अननोन, लैकिस इसका सबसे अच्छा खासियत क्या है, उसमें फियर अननोन और फियर स्ट्रेंजर है। देखो ये 5 लोग हैं, वो हमेशा, देखो उनको अननोन लगता है, स्ट्रेंजर और अननोन लगता है। देखो कार्सिनोसिन, लैकेसिस, लाइकोपोडियम, ऑक्सीजन, स्टेमोनियम एंड ट्यूबरकुलम, ये लोग अननोन और स्ट्रेंजर दोनों में भी है। तो मतलब कोई इनके साथ में रह भी रहा है तो भी उसको वो स्ट्रेंजर ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये डाउट जो पहले आ गया, डाउटफुल स्केप्टिकल केस। एयर वाटर, वाटर मतलब क्या? आपकी बॉडी इज मेड ऑफ 70% पानी, 70% वाटर, है ना। 70-72% शायद से, दुनिया भी 70% पानी से बनी हुई है। लेकिन आपको पानी से कैसे डर लग सकता है? जो चीज आपको इसेंशियल है, स्टिल यू स्केयर ऑफ वाटर, है ना। तो ये किडनी फेलियर के केसेस में भी बहुत बार आप यूज कर सकते हैं। रीनल फेलियर के केसेस में आप ये 2 चीज यूज कर सकते हो, थर्स्ट विथ फियर ऑफ लिक्विड्स एंड फियर ऑफ वाटर। ये किडनी फेलियर के केसेस में भी आपको ये चीज आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो लोग इस पे चलते हैं, डायलिसिस पे होते हैं, उन लोगों को ये चीज इनमें मिल सकती है। तो ये रूब्रिक आप ध्यान रखो प्लीज, लिख लो आज ये रूब्रिक आप लोग, फियर लिक्विड्स विथ थर्स्ट एंड फियर ऑफ वाटर। देखो कितने लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, 11 लोग हैं, इसके अंदर आपकी रीनल फेलियर के केसेस निकल सकती है। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस गर्ल, सो क्या था उसका, वो क्यों वो रिलेशनशिप में सेटल नहीं कर रही थी, इसके कारण, एंड टू बी अंडरस्टूड इज व्हाट शी वांटेड, ओके, व्हिच वाज वेरी रीजनेबल, द ऑब्जेक्टिव वाज वेरी रीजनेबल। मतलब सादा बंदा होता है लैकेसिस, अगेन टू विन ओवर लैकेसिस इज वेरी इजी। एक बहुत प्यारा रूब्रिक है लैकेसिस के अंदर, क्या है, मैग्नेटाइज्ड, इजीली मैग्नेटाइज्ड। तो ये लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है आपको, आपका बना के रखने के लिए। ये 7 लोग हैं, ये आपके बन जाएंगे और आपके बने रहेंगे, अगर आप इनके साथ में रीजनेबल रहो तो। इसके अंदर सेपिया और लैकेसिस ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है, कॉस्टिकम ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में है क्या, लेट मी चेक, आई डोंट थिंक इट्स देयर, या ठीक है। तो ये लोग आपके साथ में बने रहेंगे, मैग्नेटाइज इजीली वाले लोग जो है ये। तो लैकेसिस का क्या था, अगर वो लड़का अभी भी उसको आके माफी वाफी मांग लेना, प्यार से बोल लेना कि मेरी गलती थी सोना, ये लड़की फिर उसकी हो सकती है। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, क्योंकि लैकेसिस का सबसे बड़ा पंगा ये होता है कि वो पहला प्यार नहीं बोल पाता है। इसलिए तो लैकेसिस को होता है ना फियर ऑफ टच्ड, मैंने लिया ना कि कोई दिल के प्यार न छेड़ दे। देखो क्या उसके अंदर वो, देखो फियर ऑफ टच्ड, ये भी है उसमें फिर से, ये भी है उसका, क्यों वो जा नहीं रही डीपर रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि भाई वो कॉर्ड नहीं छेड़ देना, वहां पे वो बंदा बसता है, तो तुम वहां तक मत जाओ, फिर मुझे वो एक्सपीरियंस से नहीं गुजरना है। जब भी तेरे नाम का जिक्र होता है, दिल फिर उसी गम से गुजरता है। ठीक है, अब ओवर टू यू निशा। Yeah. So very beautifully explained. Yeah, thanks, Liyakat. So I think it is very clear that what women want, मतलब इस लड़की को क्या चाहिए था,
कि वो मुझे समझे. That was the objective of her. It is very objective, reasonable. That is the whole crux of the case. And so this is what women want. And how we understand through a case, it becomes, when we look at it from this aspect, then we understand that, like how Liyakat said, to touch that chord, it was, then it becomes how beautifully lachesis comes out. So this is what I wanted to share. Thank you. So I think last slide you can show how Liyakat has really made that what women want. Pranita, if you can share that last. So lachesis 200. Yeah, this is what women want. They want respect, understanding, equality, voice, care, space, love, beyond words towards understanding. So this is what this girl also wanted, na? की तो मला समजून का घेत नाहीये. So which is very reasonable. It was not something big that she wanted. Yeah. So we have already understood what this girl wanted. So thank you very much. Thank you. This slide was actually made by Dr. Mansi. What Okay. women want. Yeah. She shared with me when Very we were beautiful. making the poster. Yeah. She shared the slide and I liked it very much. I said, yeah, let's make this tagline. Of course, we were going to make that tagline only to understand to understand women's heart. Very beautifully, very Yeah. towards understanding. Very nice. Towards understanding through less words. The same thing applies to men also, guys. I'm gonna have what men wants also, inshallah. Yes. Yeah. Sorry. Thank you. Thank you so much, ma'am, for this incredibly insightful session. As a woman, it always a pride and a great feeling to hear from a successful and empowering woman. Your experience made this session enthusiastic, interactive, and truly interesting. Thank you so much, sir, for always enlightening us with your expertise and guidance. Fear of liquid with thirst was key takeaway from today's session. I would like to convey my deepest gratitude to you on behalf of every woman in PHF team for giving us this platform and encouraging us to become a capable speaker. Thank you so much. Thank you, Yes. ma'am. Thank you, sir. Yeah, Thank you. One more thing Thank I you, wanted to add. everyone. Yeah, Nishu. Yeah. Yeah. One more thing I wanted to add about the follow-up. It started with pineal and pituitary both. Yes. See, the thing So with it started allopathy with and pineal homeopathy. gland. It started with pineal. Yeah, and then the inferior gland, now pituitary is affected. Yes. So the adenoma is smaller size. So that is how the cure probably is progressing. Okay, Yes. probably. I'm not sure, but that is how it is from above downwards. One more thing to be added here, we are treating, we're not going to treat the so-called cause that the allopath does. Here, what was the problem? The prolactin was more, right? So prolactin is secreted by breasts. Breasts are the nurturing parts of the woman. So she's trying to nurture the love which she was not getting. Okay. So rather than treating, like allopath would probably suppress the milk by suppressing the pineal or the pituitary. No, that is what we said, cause and effect. We treat the effect because effect is going to determine the person. The reaction, the response of the person is going to tell what lies within. ओके जैसे पत्थर अगर आप पानी पे मारोगे तो अलग आवाज आएंगी, अगर आप मेटल पे मारोगे तो टंग बजेगा, अगर आप लकड़ी पे मारोगे तो ठक बजेगा. तो द रिएक्शन मेक्स द रिएक्शन इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके हमको गोली भी मारनी होती है तो हम शेर को अलग गोली से मारते हैं, है ना. इंसान को आपको पत्थर को अगर चीरने वाली गोली तो अलग होती है. तो जिस चीज को हमको चीरना है वो पर्सन है, जिस चीज को हमको करना है वो दैट इज द पर्सन दैट वी आर गोइंग टू ट्रीट. दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एलोपैथी एंड होम्योपैथी. Previously I never used to criticize allopathy, but I have been seeing they are criticizing homeopathy every now and then. They believe they behave with homeopathic medicines like shit, even though their fathers were our patients, even though they were our patients in the childhood. And if our patient goes to them, they would say the ye se kya hota hai and all that shit. So it is now for all of us homeopath to confront
them with confidence and talk about allopathy's side effects, talk about their blunders, talk about the brutality they're doing with the humanity. It is now time for all of us homeopath to stand tall, stand together, tell their flaws to the world, tell their faults to the world, and tell how homeopathy is been since 1755. Our master, Dr. Hanuman, whatever he has said is proving to be correct. With every new thing coming, whatever sir has said, whatever our master has said, is coming to be the truth. Please remember. Okay. So this is why I said ki nurturing conflict. She wanted to nurture the prem. Even now she's nurturing the love, by feeling that she has done wrong, reproaching herself. अभी भी उसका प्यार वाला ही पंगा चल रहा है, इश्क वाला लव चल रहा है. Yeah. Yes, Pranita. Yeah, Anything thank you else? so much, sir. Yeah, one more thing I wanted to share. Book Humanopathy Volume 1 is back in stock again. So those who were waiting for the book can contact me. My number is there on the flyer. And soon we will be starting a new batch of 100 days course. So you can contact me regarding the courses. And yeah, thank you so much and wish you all a happy and safe Diwali. Thank you. Thank you so Yeah, much. and wish you all Everyone a for lovely Lakshmi Pujan. Thank you. Thank you. God bless. Bye bye. Thank you. Bye bye.